एम आई विजिबल गाए देखा जाउछि ठीक ठाक ना अंधार देखा होछि? गुड मॉर्निंग अंधार लाइट नहीं पा से अंधार रहा पड़ो एबे केम देखा होछि? एबे ठीक अछि? ओके देखा जाऊ केते समय चलुची ट्राई करे वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक आज अच्छी आई होप सब रिवाइज करथियो सकाळ उठी राइट सब रिवाइज करथिबो सेंटर स्टेट रिलेशन चाहे लेजिस्लेटिव रिलेशन हो एग्जीक्यूटिव रिलेशन हो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन हो वन द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म कोठु आसी हमरो द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म केम फ्रॉम USA. This is prelim revision series 4 4th class या 5th class prelims revision series शायद 5th या 4th जहाँ भी आई ओके सो सेंटर स्टेट रिलेशन आज देखिबा हमें सेंटर स्टेट रिलेशन देखिबा इंटरस्टेट काउंसिल जो कि जोनल काउंसिल वगैरह इंटरस्टेट कोऑपरेशन सिमिलरली आमे देखिबा एमरजेंसी देखिबा पंचायत देखिबा एंड म्युनिसिपैलिटी देखिबा सो ये पार्ट आज कवर करिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट सेशन ये पार्ट रू डेफिनेटली ये पार्ट भी क्वेश्चंस आसीबो पंचायत म्युनिसिपैलिटी क्वेश्चंस आसीबो एमरजेंसी प्रोविजन यही समय न्यूज रे थिला दीज आर वेरी इंपोर्टेंट पार्ट जोंडा कि हमें देखिबा सो द सेंटर एंड स्टेट बेसिकली जेतळे दीटा गवर्नमेंट थिबो सेतळे कोन टू गवर्नमेंट मींस देयर इज ए फेडरलिज्म कांसेप्ट. What is the difference between federalism and unitary? Unitary is there is no two government, only one government which rule throughout the territory of a country. Here basically center and state means there is a federal structure, that is dual government structure. So a system of polity in which power is divided between union and its constituent units, that is states. Okay, this is federalism. सो यही पर्पज रे डिवीजन ऑफ पावर है कौन पाई डिवीजन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट कहीं आसला कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर को प्रिवेंट करिया पाई गोटिए जगह गोटिए लोक पाखरे गोटिए पर्सन पाखरे या गोटिए ऑर्गेनाइजेशन पाखरे जेमती पावर सेंटर्ड है कि न थाउ. सो दिस इज बेसिकली प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड जनरेटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन थ्रू यूनियन. सो एसआर बोमाई जजमेंट रे सुप्रीम कोर्ट कहिथिला कि फेडरलिज्म is the basic feature of the constitution. This is very important one. फेडरलिज्म जी पारिबो सब नोट्स कर दबो जत्ते शीघ्र पारिबो नोट्स कर दबो यार वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा जोंटा कि तुम नुआ पॉइंट लागिवो सेगुडा को नोट्स करिया ट्राई करिवो. मु टिके स्पीडली जीबी सो दैट मेजॉरिटी पार्ट आमे जेमती कवर करि परिबा सेति पई ट्राई करिवा. So aspect of Indian federalism देखिए गोटे fiscal federalism. Fiscal federalism माने कौन fund allocation of fiscal rights and responsibility across the different level of government. जेमती distribution of revenue between union and states है ना. ये भी आमे देखिबा आगो को जोटे कि आर्टिकल 268 रू 293 भितर पार्ट 12 of the constitution mention है. These are fiscal माने related to money, revenue related distribution. Then asymmetric federalism, that is different constituent unit are accorded different power and autonomy. So special constitution provision for the some state jam taking 371 or 371 we will also look into this. Then cooperative federalism, this is very important. Federalism which union and the states basically interact cooperatively
ओके एंड कलेक्टिवली टू सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने ପାଇଁ बेसिकली जो कोऑपरेशन थाए. So cooperative federalism seems to quite vague and there is no such constitutional obligation on union and states. सेमती किछि नाही, प्रोविजन नाही, ये गोटे concept but it is vague माने क्लैरिटी नाही. तो बेटर एग्जांपल वुड बी जीएसटी काउंसिल जोंटा कि समस्ते बसिकी डिस्कशन करंती आर्टिकल 279A एंड इंटरेस्टेड काउंसिल आर्टिकल 263. दीज आर वेरी इंपोर्टेंट जोंटा कि जेतळे व्हेनेवर यू नीड टू exemplify or you need to give any example related to cooperative federalism you can give, but there is nowhere mention in the constitution the term cooperative society, a cooperative federalism. Then competitive federalism, it is also not mentioned in anywhere in the constitution. It deals with relations among the two or more states in the matter of trade, investment and commerce. जेमती कि वेरियस रिपोर्ट आ नीति आयोग किए हेल्दी स्टेट्स अच्छी किए प्रोग्रेसिव इंडिया एसडीजी इंडेक्स, स्वच्छ भारत इंडेक्स, जेमिति तुम नीति आयोग रिसेंटली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. दीज आर ऑल बेसिकली कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करे. Okay, clear up to this? So these are basically federalism aspect rela fiscal federalism, fiscal related rela asymmetric federalism related to kichi some special provision kichi states pai, cooperative federalism and competitive federalism. So center state legislative relation, that is article 245 to 255, center state legislative relation. So distribution of legislative power between center and state, distribution of legislative power between center and states. So first देखिबा territorial jurisdiction accordingly. Territorial माने parliament पाखरे power अछि जोंटे कि whole part of territory India रे बनिया पई, but state पाखरे only state concern which law has been passed except when there is a sufficient nexus. So whole or any part of India गले parliament pass करियो. Extra territorial legislation भी या पाखरे अछि का पाखर पार्लियामेंट पाखर, स्टेट पाखर सीटा नाही. स्टेट पाखर केवल स्टेट टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इनसाइड द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट ता पाखर किछि पावर नाही. बट या पाखर एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेटिव पावर टू इंडियन सिटीजन एंड देयर प्रॉपर्टी इन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. जन माननीय हमर बहुत सारा कंट्री रे इवन जेते बांग्लादेश रो हमें नेलु एरिया सेटा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हमर जुरिडिक्शन थिला, बट ताको आम लॉ बन नहीं पार्लु. आम अंडर को जमीती गोवा थिला आम अंडर नथिला, पुडुचेरी आम अंडर नथिला, अंडमान नथिला, ड्यू नथिला, ये सब आम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बेसिकली लेजिस्लेटिव पावर थ्रो रे वी हैव टेकन ओवर. जमीती एबे भी मध्य जोंडे कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जोंडे कि इकोनॉमी ऑफेंडर जहाँ को डिक्लेयर करा होची तांकर प्रॉपर्टी जदि बाहर भी रहउची, जदि से कंट्री सहित हमर एग्रीमेंट हो जाउची ताले से प्रॉपर्टी भी हमें टेक ओवर करि परिबो. ओके सो ये गोटे है कि टेरिटोरी जो गोटे सब्जेक्ट मैटर थ्री लिस्ट जोटे कि 1935 ऑफ थ्री लिस्ट कौन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट आउ कनकरेंट लिस्ट. तीनटा लिस्ट अच्छी, तीनटा लिस्ट थ्रो रे आमर ये जोटे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आसला आर्टिकल 246 प्लस 7th शेड्यूल. सो देखिबा 246 कहीं कहली एटा कहबी मु. सो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट 100 सब्जेक्ट अच्छी, स्टेट लिस्ट रो एक्सक्लूसिव, कनकरेंट लिस्ट बोथ यूनियन एंड स्टेट्स 52 सब्जेक्ट इथर अच्छी, इथर 61 सब्जेक्ट. सो डिफेंस जोंटे कि मेजर्स ऑफ फॉरेन अफेयर, सिटीजनशिप, ये सब पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, वाटर, लैंड, एग्रीकल्चर, इज आर एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ ए. एजुकेशन कोंटी जीवो, एजुकेशन इथर जीवो, स्टेट लिस्ट जीवो, कनकरेंट रची केबे हितला, यस क्रिमिनल लॉ, मैरिज लॉ, ये रिलेटेड मैटर भी मध्य बहुत सेंटर एंड स्टेट करिवा. बट एंड अगेन द रेसिडुअरी पावर आर्टिकल 246 कोन कहूची रेसिडुअरी पावर कहा पाख रहिबो सेंटर पाखरे. आउ जेतबे कनकरेंट लिस्ट लॉ बना जीवो सेतेबेले सेंटर जदि स्टेट सेम लॉ बनेबे ताले सेंटर लॉ टा हला प्रिवेल करिवो अवर स्टेट लॉ. ओके अगेन
स्टेट लिस्ट भी सब्जेक्ट उपरे पार्लियामेंट चैनल लॉ बनै परिबो केमती बनै परिबो कौन आर्टिकल अंडर है 249 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू रे भी करि परिबो जेते 50% ऑफ स्टेट रो परमिशन नै बुझिबल नै so special condition under some specific circumstance in the parliament can legislate जोंडे कि एरे आमे आज देखिबा 249 ऑलरेडी आमे देखि सालुनी जोंडे कि कहा पई का को पावर देछि काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा पाखरे स्पेशल पावर अछि कि ये पावर कर एम्पावर करिवो पार्लियामेंट को हां कोनटा होछि हां हैला ओके सो आर्टिकल 249 कोन कहूछि जोटा कि नेशनल इंटरेस्ट है एटा कोन स्पेशल मेजॉरिटी अछि स्पेशल मेजॉरिटी माने कोन व्हाट यू मीन स्पेशल मेजॉरिटी मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ओके सो नेशनल इंटरेस्ट है ये तुमरो पासेस करि परियो रिजोल्यूशन बाय राज्यसभा ओनली एंड इट इज ओनली the domain of Rajya Sabha which can pass. Then article 252 कौन कहूँ by agreement between states where two or more state legislate resolution गोटे पास करिवो सेइथरे पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करिवो कि गोटे स्टेट लिस्ट गोटे सब्जेक्ट पे जदि बनिया पई सेही कंडीशन रे बनै परिवो and law will be applicable only to the states which demanded such legislation माने माननीय बेंगल आउ ओडिशा मिसी की डिस्प्यूट अछि तो गोटे ता ऊपर लॉ बनिया चाहउछंती पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कले भाई तुम्हें लॉ बनै दियो आमे बनै पारुनु तो सेही केसेस रे पार्लियामेंट बनैबो एवं दैट लॉ विल एप्लीकेबल टू दैट स्टेट्स ओनली नॉट ऑल ओवर इंडिया देन आर्टिकल 253 टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट पाई मध्य एटा तुमे जानिथिबो इंटरनेशनल ट्रीटी एंड एग्रीमेंट को फुलफिल करिया पई तुमको पार्लियामेंट चाहिए लॉ बनै परिबो Similarly, Article 252 during national emergency जानिचो national emergency समय इंडिया यूनिटरी फीचर को बेसी प्रिवल करे रेदर देन फेडरल फीचर सो यूनिटरी हे जो माने सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल पावरफुल इवन स्टेट लिस्ट रो सब्जेक्ट भी ये बने परियो लॉ सो सही लॉ तार वैलिडिटी 6 months after the expiration of expiry of the emergency expiry वाला 6 month पर्यंत रहिबो गला रे ओके आर्टिकल 356 अंडर प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट रूल सही समरी मध्य है ना प्रेसिडेंट रूल समरी भी during the president rule the parliament can make laws with respect to subject in the state list such law continue to be operative even after the president rule but it can be repealed or altered or reenacted by the state legislature आसला परे से माने ताको हटै परिबे सो बुझियलो आर्टिकल 249 आर्टिकल 252 स्टेट भीतर एग्रीमेंट 253 इंटरनेशनल ट्रीटी 352 नेशनल इमरजेंसी 356 स्टेट इमरजेंसी राइट Then Article 248 basically residuary power which was not enumerated in any list of the 7th schedule are vested in center like Canada and unlike USA, Australia and Switzerland. So ये concept residuary power का पाखरु आसी कनाडा पाखरु हाँ बताओ
some other provision for center control over state legislature. Article 200, governor reserves certain types of bill passed by state legislature for consideration of president. मते कहलो गवर्नर जो रिजर्व रखी परिवो सब रिजर्व रखी पारि मनी बिल रिजर्व रखी परिवो नहीं रखी परिवो कोन बिलटा रिजर्व रखी परिवोनी any bill passed by the state legislature can be reserved by governor. Anyone? कौन है चुप कहीं गेलो? No sir. This is ठीक माने बोलो. I will not tell you. Article 304, prior approval of the president is required on certain matters mentioned in the state list, that is bill imposing restriction on freedom of trade and commerce. এই कंडीशन रे प्रेसिडेंट रो अप्रूवल रिक्वायर अछि. आर्टिकल 360 जेमति फाइनेंशियल इमरजेंसी केस रे प्रेसिडेंट डायरेक्ट करिवे स्टेट को टी रिजर्व मनी बिल. So money bill can be reserved when there is a financial emergency. Governor cannot reserve money bill only if there is a financial emergency. बुझल नहीं तो ये गोटे बिल जी की रिजर्व रखी पारे बाकी सब रिजर्व रखी पारे. Any bill can be reserved and it is the discretionary power of governor, but by convention it should not reserve any bill. By morality or by the principle of democracy it should not reserve any bill. देन देखिवा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस. आमे देखुचे कोन सेंटर स्टेट रिलेशन रे आमे देखिले एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन. या पूर्व आमे देखिले कोन बेसिकली लेजिस्लेटिव. सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन आर्टिकल 256 to 263, certain restriction are imposed on the executive power of the state, so to give center the power to control the state executive or administrative matter. Thus the executive of every state is to be 256 and ensure compliance with the law made by parliament and any existing law which apply in the states. Then 257, not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the center in the state. So तामाने कोन एटा वेरी इंपोर्टेंट. स्टेट सेंटर रो जहा लॉ बना जीवो ता सहित पार्लियामेंट जे लॉ बनैथिबो ता सहित कंप्लायंस करिया को बाध्य एवं एक्जिस्टिंग लॉ अछि सेटा तो ऑलरेडी थिबो. सिमिलरली बाधा सृष्टि करिवो नाही. ओके सेंटर रो एग्जीक्यूटिव पावर माननीय सेंटर रो अछंती सब स्टेट रो सेंटर रो एजेंट अछंती. माननीय इनकम टैक्स ऑफिसर होंतु IRS ऑफिसर वगैरह ये सब सेंटर स्टेट रे काम करंती ना. से रुहंती कोंटी सेंटर तो गोटे जगह सेमती किछ नाही तो स्टेट रे रहउचंती. तो स्टेट रे सेमानकर काम को जेमती के बाधा सृष्टि करिवो ना. तो सेटा आर्टिकल 257 मध्य रे मेंशन अछि एवं 256 रे कंप्लायंस करिया पई कोआ जाय. वेरी इंपोर्टेंट दिस इज. सो इन बोथ द केसेस द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर extend to giving
such direction to the states are necessary for this purpose. Jemti construction and maintenance of means of communication declared by national and military importance. Protection of railways, if not compiled with direction, Article 265 can be, sorry, 365. Janicha, failure to comply with the direction given by the union. In that case, precedent rule can be imposed in the state under Article 256. तुम यदि रेलवे को जाकि भंगाभंगी कर रेलवे को करईदबनी सेंटर से केसेस भी तुम प्रेसिडेंट रु लगी जाई पारिबो। क्लियर समझते? आर्टिकल 257 कौन ऑलरेडी जदि लॉ इन प्लेस अच्छी सेंटर एग्जीक्यूटिव माने एठी काम करूचंती स्टेट रे तांकु जेमती बाधा सृष्टि न करिवो स्टेट। जेमती मान लियो इनकम टैक्स रेड हैला आईटी डिपार्टमेंट कहार सेंटर रे से माने जाई कि रेड कले कौनसी मंत्री घरे स्टेट पुलिस आनी ताको अरेस्ट कर नहीं पड़ेबो। बुझिल नहीं तामाने कोन तांकर ऑफिशियल ड्यूटी करिया पई तांकु बाधा सृष्टि कले इम्पीड कले नॉट टू इम्पीड और प्रिजुडिस। ओके कि ये सेंटर करूची स्टेट एग्नेस्ट या स्टेट करू सेंटर एग्नेस्ट से बळे मेंटालिटी नै कि तुमे ताको बाधा सृष्टि करि परिबो नाही। सेंटर एग्जीक्यूटिव को हाँ हाँ सेम केसेस बुझियला कौन कहले सीबीआई सेटा केस अलग थिला सीबीआई रेड करथिला सीबीआई को भी करप्शन चार्जेस रे से माने सेटू अरेस्ट करथिले ना ना पावर दिया नहीं। सीबीआई रो रूल अच्छी सीबीआई कौन सी स्टेट रे सुओ मोटो जाई परिबो नाही या सेंटर चाहिले सीबीआई सेठी दखल अंदाज दे परिबो नाही ओनली व्हेन स्टेट रिक्वेस्ट करिवो एंड जदि जुडिशियरी खास करके हायर जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जदि इम्पोज करिवो रेस्ट्रिक्शन माने फोर्स करिवो सीबीआई को जाई कि तुमे ये केसेस को हैंडल करो इन दैट पर्टिकुलर केसेस ओनली सीबीआई कैन गो टू द एनी स्टेट अदरवाइज स्टेट को आसीबार सीबीआई रे किछ अधिकार नाही। जेमिति ये आरजी कर हॉस्पिटल केसेस रे भी हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट कहला कि सीबीआई को दिया जाऊ तापरे जाई सीबीआई को गला। So mutual delegation of functions. The Constitution provides intergovernmental delegation of executive functions to mitigate rigidity and avoid situation of deadlock. Gudela Article 258(1), 2 and 258A. Executive function of center to the state. President with consent of the state government. Mutual delegation of function माने कौन? मानि नियो गोटे स्टेट रो फाइनेंस डिपार्टमेंट रो जाइची इनफॉरमेशन सेंटर रो फाइनेंस डिपार्टमेंट तो तांको भितर गोटे इंटर गवर्नमेंटल डेलीगेशन थाए सो दैट कोऑर्डिनेट करिया पे इजी हो। बुझिला नहीं नले मानिना भाई स्टेट रो जीवो सेंटर तो बहुत बड़ बड़ मिनिस्ट्री बहुत ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तो गोटे पर्टिकुलर जगह को जीवा पई हेले कोन दरकार तांकर
ये दरकार कोऑपरेशन दरकार कोऑर्डिनेशन दरकार कि यही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रो यही लोक पाखक आमर ये इनफॉरमेशन गले देले पहुंची गला सो स्मूथ फंक्शनिंग करिया पई ये बेसिकली रखा है एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ सेंटर टू द स्टेट्स एटा हला सेंटर टू द स्टेट प्रेसिडेंट जोंटा कि विथ कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट किसी जगह रे डेडलॉक सिचुएशन न हो ये कंडीशन रे करा जाए बट किसी जगह रे जेमिति स्टेट कंसर्न जो स्टेट रो बाउंड्री चेंज करा जाए स्टेट रो ना चेंज करा जाए से समय कंसेंट निया जाए स्टेट गवर्नमेंट बट सेटा कंपलसरी नुहे प्रेसिडेंट मानी पारंती या न मानी पारंती आर्टिकल 258(2) कोन एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ सेंटर टू स्टेट से पार्लियामेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट पार्लियामेंट विदाउट सो ए दीटा भीतर डिफरेंस कोन बेसिक डिफरेंस कोन एटा प्रेसिडेंट पई आ एटा पार्लियामेंट पई आ किछि फरक नाही बट बोथ एग्जीक्यूटिव फंक्शन इज सेंटर टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ सेंटर आ स्टेट प्रति कोन तागर फंक्शंस रहउची प्रेसिडेंट किछि जगह कंसेंट नहीं पारे स्टेट गवर्नमेंट रो आ पार्लियामेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट बट स्टेट लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट रो किछि भी नियम करिया को चेंज करिया हेले से परमिशन दरकार विदाउट परमिशन स्टेट लेजिस्लेचर करि परिबो नाही सिमिलरली आर्टिकल 258 ए एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ स्टेट टू द सेंटर ये के करि परियो गवर्नर लेट से प्रेसिडेंट रु लागिला प्रेसिडेंट लागिया पई हेले गवर्नर कोन करिवो गुटे सिचुएशन पई गुटे राइज माने अप्राइज करिवो सेंटर को कि देखो ये सिचुएशन आसी ए समय प्रेसिडेंट लागिया दरकार देन ताकू सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट दबो देन एठी प्रेसिडेंट लागिला So basically deadlock avoid all India service controlled and jointed by center and state देखिबा कोन अल्टीमेट कंट्रोल का पाखरे सेंट्रल गवर्नमेंट कोन थाए पावर ऑफ अपॉइंटमेंट करंती सेंटर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन सेंटर प्रमोशन एंड ट्रेनिंग ये भी सेंटर state government basically power to suspend article 312 of the constitution authorize the parliament to create all India services हमें पढ़ी बाय राज्यसभा जदि रिजोल्यूशन पास करिबा जोंटा कि 2/3 मेजॉरिटी स्पेशल पावर दिया है राज्यसभा पाक अपॉइंट करिवो ट्रेनिंग दबो डिसिप्लिनरी एक्शन बेसिकली नहीं परिवो डिसमिस भी करि परिवो सेंटर डिसमिस भी करि परिवो बट प्रमोशन केस रे टिके वेरी अछि प्रमोशन ये भी दे परिवो बट प्रमोशनल लेडर गुटे अछि तांगर सेटा को फॉलो करिकी करिवो बट डिपेंड करे कि कोन डिपार्टमेंट कोन केमि दउचंती सेइथरे भी स्टेट गवर्नमेंट पाखरे टिके पावर अछि So देखिए financial relation this is the most important part this is the most important part of center state relation and questions mostly came from here
किए जड़े कहला पावर कोड हूँ 9 टा 12टा 8 टा 12टा पावर कोड तो है हाँ एते गुड़ा आर्टिकल मु जो गुड़ा कहूँ से गुड़ा ही देखु मु जो गुड़ा कहूँ से गुड़ा ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट रो सब आर्टिकल देखि दियंतु फंडामेंटल राइट डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजनशिप प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव जो गुड़ा मु कहूँ से गुड़ा ही देखु मन तुम सब अच्छी कहीं कर तुम भावुच मन रही जो भाभी दौच मन रही ना से मन रोनी मन सब मन अच्छी तुम सब ना नहीं एठी जदि मन पड़ू न एग्जाम रे पड़ जियो मने Article 268 tax and duties levied by union but collected and appropriated by states. This is very important, very important. Tax and duties levied by ये सब आर्टिकल मन रखिए जो आर्टिकल मु कहूँ फाइनेंशियल रिलेशन रे एथर क्वेश्चन से एथर आसबे टैक्स एंड ड्यूटीज लेविड बाय यूनियन यूनियन लगेब कलेक्ट करियो किए रखियो किए स्टेट्स जेमती स्टाम्प ड्यूटी ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज पी नोट्स प्रोमिजरी नोट्स etc except in case of union territory this duty is collected by union like Delhi सेंट तुम्हें जो स्टाम्प पेपर देखिछ 10 टंकिया 50 टंकिया 100 टंकिया से पेपर किए दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवी लगेला किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट पैसा रखे किए जिते स्टाम्प पेपर वगैरह स्टेट गवर्नमेंट तो सही कथा कहूँ collected and appropriated by states and these taxes and duties do not form the part of consolidated fund of India केमती रहिबो जदि स्टेट रखुची then article 269 taxes levied and collected by the union taxes levied and collected by the union but assigned to states with which they are levied गोटेला सक्सेशन ड्यूटी कौन जान सक्सेशन ड्यूटीज हाँ तुम दादा प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर कर नेल से केसेस रे जोटा कि एग्रीकल्चरल लैंड छाड़ी आउ अलग प्रॉपर्टीज बिजनेस एम्पायर को ट्रांसफर कर लो ट्रेड को ट्रांसफर कर लो बिजनेस ओनरशिप को ट्रांसफर कर लो से केसेस रे इवन गाड़ी ट्रांसफर कर लो तुम ना को तो बापा ना तुम ना को सो से सक्सेसन ड्यूटी गोटे लगे से केसेस रे एग्रीकल्चर लैंड हेले स्टेट नहीं जीवो पूरा देन स्टेट ड्यूटी इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड स्टेट ड्यूटी जानी टर्मिनल टैक्सेस ऑन गुड्स और पैसेंजर carried by railways sea or air terminal taxes lage and taxes on railway fare freight taxes on transaction in the stock exchange ये सब रे तुमरो ये कंडीशन कौन आर्टिकल 269 कौन कहूची टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट as हाँ स्टेट को असाइन होती है ना 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 टैक्स लेवी करिवो अब कलेक्ट करिवो सेंटर बट
स्टेट को केतेबेले असाइन करे जे एई सब ड्यूटी कलेक्ट करिया पे नबनी स्टेट कामटा ताको दिया जाए करिया पे जो रेट रो लगा जाई था से रेट रो ये कलेक्शन करी खाली दबो आर्टिकल 269 ए जानी जो एटा रिसेंटली एमेंड हेची तुमर आ गोटे क्लास रे पॉलिटी रिवीजन सर जीवो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देन तापरे आ सर जीवो सब मिसलेनियस जाति आर्टिकल 269 ए जीएसटी on interstate trade or commerce levied and collected by government of India but appropriated between the union and states as provided by the law of the parliament. So the amount appropriation to the states shall not form part of the consolidated fund of India. कहीं हाँ सेटा जीएसटी काउंसिल एटा भी एमेंड हेइतला नी जीएस गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स जीएसटी कहा ऊपर इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स एटा खाली मन रखियो एटा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पार्ट नुह बट सेंटर नौची यूनियन नौची कहीं पार्ट नुह कोई परियो कि पब्लिक मन तो सब व्हाई इट इज नॉट पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया basically subject to by the law of parliament but it is not permanent it is decide करा जाए कि यार टैक्सेस केते रहइबो केते यूनियन नेबो केते ये रहबो ये टेम्पोरारी बेसिस रे अछि सो सेहि पई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रे ये पार्ट नुह देन आर्टिकल 270 टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन हां हां कथा तो करिया को हां आनी बसा दो आर्टिकल 270 हाँ the amount हाँ हाँ ठीक अच्छे ना ठीक अच्छे यू आर राइट जोटा कि स्टेट्स को दिया होची ऑब्वियसली स्टेट्स को दिया होची माने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो पार्ट रहिबो नै केवल स्टेट्स को जोटा दिया होची राइट देन आर्टिकल 270 टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन and distributed between union and the states tax levy करूची and collect करूची union but एटा distribute करूची union and state all tax and duty refer to union list all tax and duty refer to union list सेटा को कौन कह जाए से जते सब यूनियन नबो बाकी तांको भीतर यूनियन लिस्ट जहाँ सब टैक्सेस अच्छी जो यूनियन लिस्ट जो जो टैक्सेस अच्छी सेटा यूनियन गवर्नमेंट नबो बट डिस्ट्रीब्यूट करियो स्टेट भितरे जेमटा कि फाइनेंस कमिशन रिकमेंडेशन अनुसार सो 3 कैटेगरी मेंशन होइची एक्सेप्ट कोन आर्टिकल 268 269 एंड 269 ए एंड सरचार्ज सेस ये हटी एगुडा पार्ट ऑफ नबनी आमे ऑलरेडी देखि सरछु एगुडा
268, 269, 269A এবং surcharge and cess. What do you mean by surcharge? And what is the difference between surcharge and cess? Any idea? एजुकेशन में हमरो टैक्स अपन टैक्स तो समथिंग कोनटा सेटा सेस नहीं सरचार्ज surcharge टा yes surcharge टा हला tax upon tax केतळे निया जाय किछि एग्जांपल अछि लग्जरी आइटम रे बेसिकली लागे से सरचार्ज हां लग्जरी आइटम रे काई लगे जीएसटी अंडर आसे पळिला सेटा एग्जैक्टली पर्टिकुलर अमाउंट माने कोन सेटा केते अमाउंट क्रॉस करथिबो हां अरे जानते ना नहीं 1 करोड़ अधिका जार इनकम थी 10% एक्स्ट्रा टैक्स देवा पड़े नहीं जाने सेटा सरचार्ज ओके सेस कौन स्पेसिफिक पर्पस जमती स्वच्छ भारत सेस केवल सेटा खर्च हम कौटी स्वच्छ भारत कैश रे ही खर्च हम तो सेटा एक्स्ट्रा जोटा कि टैक्स 0.05% 0.5% एमती लगी जाए Article 271 surcharge on certain tax. The Parliament is authorized to levy surcharge on tax mentioned in the above two categories, that is 269 and 270, and the proceeds of surcharge go to center exclusively, and these charges are not shareable. Direct center पाखु जीवो. माने चिंता करो तुमरो 20 लाख रो एभव जे कमाउची 20 लाख ना एबे 15 लाख कर देजी 15 लाख रो जे अधिक कमाउची से 30% दोजी टैक्स 20 लाख साइड 20 लाख रो जे अधिक कमाउची से 30% टैक्स दोजी जने जदी मंथली 20 लाख कमेइबो सॉरी मंथली को ईयरली तो तार 6 लाख टका से सरकार को दो हमको कोई नहीं कर करप्शन हो सी कष्ट करियो खाली सेटिंग नहीं है 6 लाख तो 6 लाख तुम पाइल 14 लाख टका माने तुम टैक्सड मनी ऑलरेडी तुम सरकार को देसला पाइल तापरे अटा किनिबो डाली किनिबो तेल किनिबो गाड़ी किनिबो कॉस्मेटिक किण लोगा किण सेइथरे सब टैक्स सबथरे जीएसटी टैक्स कलेक्शन जो ही हमरो एटा माने ब्लैक मनी भी अधिका पड़े ब्लैक मनी होउची इन्फ्लेशन अधिका होउची रीजन हैला से सो तापर गला ये 30% जे फेर पुनी 1 करोड़ रु अधिक कमउची ताकू फेर पुनी एक्स्ट्रा 10% दवा पड़ुची माने जे कोटी टका कमेबो से 40 लाख टका सरकार को दे देबो कष्ट करिवो तुमे रिस्क नबो तुमे मेहनत करिवो तुमे तापरे मजा खाइबे जाय कि बसी की सर वो सेटा भी टैक्स जो कलेक्शन भी होची जदी प्रॉपर वे जदी इंप्लीमेंट हो सेटा हमें गुड वे ठीक नुहे टैक्स इज ए रिग्रेसिव मैनर जो कंट्री टैक्स अधिका निए से कंट्री इवॉल्व हो परिबनी तुमे केमती चाहिबो कहलो तुमे जदी कष्ट करी मेहनत करी एते पैसा इनकम करलो तले तुमरो अधा पाखा कि नहीं गला सरकार तुमको मोटिवेशन आसीबो यूएस रो 2% टैक्स 1.5% 2% मैक्सिमम अरे इकोनॉमी चलियो केमिति जेतले इकोनॉमी बूस्ट केतले हो जेतले लोके किनिबे परचेज करिवे लोक पाखर पैसा रहइबो तुमे तो मास शेष को लोक पाखर पैसा नहीं गलो सब प्रकार टैक्स लगेगी आ लोक पाखर पैसा रहिला कि से आ किनिबो लग्जरी आइटम अलगा किनिबो गाड़ी घोड़ा बंगला किनिबो पैसा रहिले सिना लोक खर्च करिवे पैसा कोनी थोड़ी ना माटी भीतर पुरी नहीं जिवे उससे पैसा भी प्रॉपर वे यूटिलाइज भी हो ठीक अछि tax levied and collected and retained by the states जोटा कि स्टेट लिस्ट रे जहा अछि
जहाँ सब लैंड रिलेटेड एग्रीकल्चर रिलेटेड तुम खजना फजना सब दियोनी से सब। आर्टिकल 275 ग्रांट्स इन एड जे कि ये भी मध्य सही स्ट्रक्चर। सो ग्रांट्स इन एड देखिबा गोटे हला स्टैट्यूटरी ग्रांट्स आ गोटे हला डिस्क्रिशनरी ग्रांट। स्टैट्यूटरी माने पार्लियामेंट लॉ बनैबो those states who are in need for such fund, particularly for promotion of tribal welfare. These funds are given to the states on the recommendation of the finance commission. These are statutory grants. Discretionary grant जेमिति एबे मोदी जी देइचंदी कोउठी बिहार बिहार को और आंध्र को। Both center and state can make grants for the any public purpose. These are discretionary grants. Then loan, the union government may provide loan to any states or give guarantee respect of loans raised by the states. State जरा जाकि आदानी को मागिला पैसा या आरबीआई को पैसा मागिला देन सेही केसेस रे कोन करिवो ना सेंटर गारंटर भले रहिवो बुझिला नै जेमिति देखियो तुमे जे लोन करथो तुम घर तर जने तुम घर फैमिली मेंबर भीतर जने जॉब होल्डर थिबे बैंक मागिवो तांकर गारंटी गवर्नमेंट जॉब सर्वेंट थिबो तांकर गारंटी सो दैट से प्रोटेक्टेड ही रहिबो काइना पैसा न पाइले ताको धरिया से सेथि में सेंट्रल गवर्नमेंट को कराई जेठी गारंटर। आर्टिकल 274 the previous sanction of the president that no bill or amendment can be introduced or moved in either house of parliament without the previous sanction of the president. If जानिचो money related matter है यांकर previous sanction दरकार if it impose or varies any tax in which states are interested. It varies the meaning of expression agricultural income as defined in the Indian Income Tax Act and it affects the principle on which money are distributed to the states. Principle on which money are distributed to the states. It imposes any surcharge on any specified tax or duty for the purpose of union. In that condition जदि tax related किसी amendment होची किसी changes होची से money distribution related changes होची से cases रे president article 274 ये president रो previous आर्टिकल 110 तो जे कोनोसी माने बिल जदी इंट्रोड्यूस तारो प्रीवियस सैंक्शन हमरो आर्टिकल 274 अनुसार तुम्हें इम्पोज करि परिबो नाही माने इंट्रोड्यूस करि परिबो नाही विदाउट प्रेसिडेंट रो रिकमेंडेशन या तांकर सिग्नेचर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू distribution of non-tax revenue basically center major source of non-tax revenue for the center कौन ना post and telegraph railways banking broadcasting currency and coinage central public sector enterprises SCT and labs SCT माने कौन किए कहि परियो major source of non-tax revenue of the these are कौन ना non-tax revenue टैक्स रेवेन्यू तो देखिल these are non tax revenue जोटा कि सरकार बिजनेस करके प्रॉफिट करुछि इरिगेशन हो फॉरेस्ट फिशरीज स्टेट पीएसयूज एससीट एंड लैब्स एसकिट कौन एनीवन सो ये कि प्रॉपर्टी जोटा कि जे तार कि नबार नहीं प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी सरकार नहीं जो बुझे नहीं लेट से टाटार बहुत प्रॉपर्टी अच्छी बंद हो गला टाटा तार के आउ नहीं बारिश नहीं तो से प्रॉपर्टी किए नहीं जीवो गवर्नमेंट लेट से टेलीकॉम बीएसएनएल
तार पैसा नहीं। देन देखिए इंटरस्टेट कोऑपरेशन। हाँ सेटा थिला से कॉन्सेप्ट एनी प्रॉपर्टी भी इवेन इवेन मानिनिय गोटे कंपनी इनसॉल्वेंट हो गला जेमती मालिया ता प्रॉपर्टी छाड़ी पड़े गला ताको टेक ओवर करि परियो माने वन प्रॉपर्टी टेक ओवर बाय गवर्नमेंट। हाँ हाँ सेटा भी होतला से केसेस रे भी हुए सेमती। नेक्स्ट देखियो आमे सेंटर स्टेट कोऑपरेशन। टेक 5 to 10 minute break. I will start again. So interstate cooperation. देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकानिज्म कौन अच्छी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेकानिज्म कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 resolution of interstate water dispute, mutual recognition of public acts, records and judicial proceedings, freedom of interstate trade, commerce and intercourse. These are देखियो यार वन बाय वन हमें देखियो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकानिज्म। देन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेकानिज्म बेसिकली जोनल काउंसिल and north eastern council. These are the mechanism through which we can coordinate with the state या state भितरे या sometimes state center भितर देखो बहुत सारा डिस्प्यूट हुए जेमती वाटर डिस्प्यूट हमर महानदी वाटर डिस्प्यूट सेही भलिया तुमरो डिस्प्यूट हुए। सो रिजोल्यूशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट आर्टिकल 262 कौन कहूँ ना पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट पई पार्लियामेंट चाहिए लॉ बनै परिबो जेमति ट्रिब्यूनल फॉर्मेशन करे एंड इट आल्सो प्रोवाइड दैट नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन रेस्पेक्ट टू एनी सच डिस्प्यूट। सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट या जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करि परिबो नाही। देन under article 262 again the parliament enacted the interstate water dispute act 1956. this is very important जेहेतु this article empowers parliament सेइथि पई पार्लियामेंट गोटे लॉ बनेला जोंटा कि सेटा ना कोन ना इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 which empowers the central government to set up an ad hoc tribunal for the adjudication of dispute between two or more states. And the decision of the tribunal is final and binding on the parties to the dispute. Tribunal जो decision ताको फाइनल माना जीव। So over the year the central government set up 8 interstate water dispute tribunal in relation to rivers such as Krishna, Kaveri, Godavari, Mahanadi। ये सब ट्रिब्यूनल धीरे धीरे माने फॉर्मेशन होईची अंडर द एक्ट ऑफ
Interstate Water Dispute Act 1956. क्लियर है? सो वाटर डिस्प्यूट जो थी स्टेट स्टेट भितर से यही लॉ काम कर एक्ट काम कर एंड दिस एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट. आर्टिकल 263 coordination through interstate council. Interstate council, article 263 provides for establishment of an interstate council by an order of the president as and when it is needed. President order रे ये बने हेबो interstate council and the Sarkaria commission on center state relation 18387 रे ये मध्ये recommend करथिला कि गोटे permanent interstate council establishment of permanent interstate council under article 263 ये गोटे बना जाऊ. So accordingly the interstate council was established in 1990s by presidential order. ए रेकमेंडेशन ऑफ कहार सरकारी कमिशन रेकमेंडेशन रे गोटे इंटरस्टेट काउंसिल हैला जोटा कि एस्टैब्लिश हैला 1990 रे. हां सर स्लाइड रो अपर साइड कट अछि माने प्रॉफिट कोनटा कहलो अपर साइड कोनटा कहलो सर स्लाइड रो अपर लाइन टा एटा ना ना कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल लिखा ही जी हम शायद विजिबल होनी सर तो से ओके जूम आउट कर होनी. ओके ओके एठी टिके प्रॉब्लम होची मु लिखु छी तुम देखा जाउनी बदे नहीं अपर कोटा कोटे लाइन टा सर विजिबल होनी देखा गला कि यस सर यस. Then freedom of interstate trade and commerce and intercourse. Freedom of interstate trade, commerce and intercourse. In Article 301 of the Part 13 of the Constitution, provide that trade and commerce and intercourse throughout the territories of India shall be free. So it provides freedom from all restriction except those provided in Part 13 itself. So Parliament can impose restriction on the freedom of trade and commerce and intercourse between the states within a state in public interest करि पारे. एट तो सरी गला. State legislature can legislate can impose a reasonable restriction on this freedom of public interest with previous sanctions of the president or without the preference to one state over another. एटा होउथला ए पर्यंत जोंडे कि ये जहाँ लेखा होउची सेया होउनी एक्चुअली फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड ताले तुम कोन लागिवो कोन सब दार फ्रीडम अछि ट्रेड इजीली होउची कोन सेया होउथला बिफोर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन सेया होउथला कि तुमे स्टेट को स्टेट गले तुमको टैक्स रेट चेंज हो जिवो तुमको टोल टैक्स देवा पड़ियो स्टेट को स्टेट ये हले तो सेट जिनसडा बेसिकली जो रेस्ट्रिक्शन जो लगे दी स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट वाले जी हजार तक इंपोज कर दी थांती. देन म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स records and judicial proceedings. कौन हला records and judicial proceeding. So under the constitution the jurisdiction of each state is compiled to its own territory. Under the constitution the jurisdiction of each state is confined to its own territory. However, Article 261 provides that full faith and credit shall be given throughout the territory of India to public acts, records and judicial proceedings of the union and of the every states.
So the expression of public acts include both legislative and executive acts of the government. माने जहाँ भी पब्लिक एक्ट्स होउची किमा रेकॉर्ड्स होउची जुडिशियल ऑर्डर होउची थ्रू आउट द कंट्री ताको फॉलो करिया को कथा को आउची. देन देखियो इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 of the Indian Constitutions. Article 263 of the Indian Constitution. Prime Minister was the chairperson. Prime Minister was the chairperson. Chief Minister of all states are the members. ସେଇଥିରେ ରହିବେ. And Chief Minister of UTs having legislative assembly ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ରହିବେ. And Administrator of UTs not having legislative assembly. तामाने ଏଇଥିରେ Chief Minister କାହାର ରହିବେ? Delhi and Puducherry. Delhi and Puducherry. आमर बर्तन यूटी केतरा अछि? Governor of state under president rule. Governors of the state under president rule. जो जगह प्रेसिडेंट लगी थी से जगह गवर्नर रिप्रेजेंट करेंगे. 6 कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर. And 5 ministers जो रहिबे of cabinet rank or minister of state independent charges as permanent invitee nominated by the prime minister. So these are composition. Then standing, so prime minister chairman रहिबे interstate council. Standing committee of council कौन? For continuous consultation and process of the matter of for consideration of the council. Currently it consists of union home minister as a chairman. ये standing committee माने ये continuously रहिबो. These are temporary. जेतरे council हैला सेतरे माने बसिले. But these are standing committees permanent body. ये डिस्कशन कंसल्टेशन ये जहाँ भी डिसीजन है ये डिसीजन को फुलफिल करिया पे. आउ यूनियन होम मिनिस्टर एज द चेयरमैन होती. 4 अदर यूनियन मिनिस्टर रहिबे एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ 8 स्टेट्स एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ 8 स्टेट्स एथि रहिबे. माने इंटरस्टेट काउंसिल अंडर जो स्टैंडिंग कमिटी बसिबो इंटरेस्टेड काउंसिल अंडर स्टैंडिंग कमिटी बसिबो. स्टैंडिंग कमिटी है परमानेंट बॉडी. ये थ्रू आउट द ईयर ये थिबो. आ एमानक भितर तांकर कंसल्टेशन डिस्कशन जहाँ भी किसी डिसीजन है तो सी डिसीजन ये जो ये सम 2 वर्ष को 3 वर्ष को 5 वर्ष को थरे काउंसिल हुए. बट ये परमानेंट बॉडी. एंड रूल कौन? इट इज ए रेकमेंडेटरी बॉडी on the issues relating to interstate, center state and center union territories relation, and its decision is not binding. And interstate council secretariat it was set up in 1991 and is headed by secretary to the government of India. Since 2011 it is also functioning as a secretary of zonal council. So interstate council और zonal council देखिबा. zonal council कौन? बेसिकली जोन वाइज. interstate council माने टोटल होल इंडिया रे रहिबे. zonal council कौन ना स्मॉल पार्टेस रे. 5 zonal council टोटल अछि. कौन हला?
Zonal Council, 5 zonal, Northern Zonal Council, Central Zonal Council, Eastern, Western and Southern Zonal Council. And या छड़ा आउटे अछि North Eastern Council. 5 Zonal Council are the statutory body established by the State Reorganization Act 1956. This is very, very important. Northern Zonal Council, Central Zonal Council, Eastern Zonal Council, West. आमर ओडिशा कोथरे अछि Eastern Zonal Council under. ଯେତେବେଳେ 1956 ରେ स्टेट रिओर्गानाइजेशन एक्ट आसिला आंध्र प्रदेश को फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट करागला सेतेବେଳେ चिंता करागला कि जदि जोन वाइज जदि गोटे यूनाइटेड हेक रहिबे देन डिवीजन रो आउ भले सेही भले सिचुएशन आसीबो नाही तो ताकू कोऑर्डिनेशन करिया पे गोटे जोनल काउंसिल बनाला ईच जोनल काउंसिल रे हेड के रहिबे यूनियन होम मिनिस्टर एज द चेयरमैन एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स इन जोन दैट इज ईच सीएम एक्ट्स एज ए वाइस चेयरमैन रोटेशन बेसिस मानि नियो ईस्टर्न जोनल काउंसिल रे 5 मेंबर्स असंती ये 5 मेंबर्स बेसिकली रोटेशन वाइज वाइस चेयरमैन तो सब रहिले कि होम मिनिस्टर तो रोटेशन बेसिस पांचटा धर मानि नियो बिहार अछि उड़ीसा अछि वेस्ट बंगाल अछि झारखंड अछि छत्तीसगढ़ अच्छी तो ये सब स्टेट रोटेशन बेसिस ये थरे बिहार वाइस चेयरमैन रहिबो देन नेक्स्ट ओडिशा नेक्स्ट वेस्ट बंगाल देन झारखंड एंड छत्तीसगढ़ यही बढ़िया रोटेशन बेसिस रे 1 ईयर बेसिस रे हबे टू अदर मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोनल आउ दी जण मिनिस्टर रहिबे ईच स्टेट रो दी जण मिनिस्टर ता भितर जणे होम मिनिस्टर रहिबे आउ जणे बेसिकली केही ही पारे आउ देन एडमिनिस्ट्रेटर रहिबे कोठू जेतळे यूटी यूटी एथियो सेथरे एडमिनिस्ट्रेटर रहिबे ये थिला तुम्हारे जोनल काउंसिल नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर मेघालय मिजोराम नागालैंड सिक्किम एंड त्रिपुरा केतरा स्टेट है 7 सिस्टर कहती सिक्किम को धरले 8टा 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट it is also a statutory body so zonal council is a statutory body interstate council is a constitutional bodies कहीं interstate council comes under article 263 ये zonal council under the act of the parliament state reorganization act 1956 एठी भी सेमती नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 या अंडर है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल से या स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाए सो यूनियन होम मिनिस्टर सेमती चेयरमैन रहिबे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस जोंटे कि डोनियर एज ए वाइस चेयरमैन रहिबे दिल्ली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ये किसी अच्छी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये सब यांकर जो इंडिपेंडेंट चार्जेस एमओएस रुहती मिनिस्टर ऑफ स्टेट से वाइस चेयरमैन रहिबे गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट 8 स्टेट्स एमाने सब रहिबे एंड 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट दीज आर द मेंबर रहिबे जोंथिरे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल रे मु कहबी ईच जोन जोनल काउंसिल कहबी ये तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईसीएल इंडिपेंडेंट चार्जेस जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस सेंटर रो एंड स्टेट लेवल सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट माने सेंटर
मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफ डोनियर माने डिपार्टमेंट ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनियर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक जाए ओके 5 जोनल काउंसिल 5 जोनल काउंसिल नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल आम देखीदे जोटा कि सॉरी नॉर्दर्न जोनल काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब राजस्थान दिल्ली एंड चंडीगढ़ देन ईस्टर्न जोनल काउंसिल बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल सिक्किम एंड उड़ीसा देखो सिक्किम ईस्टर्न जोनल काउंसिल भी अच्छी सॉरी नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल भी अच्छी एठी ईस्टर्न जोनल काउंसिल भी अच्छी बाकी आउ सब एतिक अच्छी देन साउदर्न जोनल काउंसिल आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक तमिलनाडु केरला एंड पुडुचेरी सेंट्रल जोनल काउंसिल यूपी उत्तराखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एंड वेस्टर्न जोनल काउंसिल गुजरात महाराष्ट्र गोवा दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव दीज आर 5 जोनल काउंसिल डू रिमेंबर ये क्वेश्चंस भी आसी पारे कौ जोनल काउंसिल रो किए अच्छी emergency these are basically zonal council through रे आमे कोऑपरेशन इंटरस्टेट कोऑपरेशन आमे करि परथलो नेक्स्ट आमे देखिबा इमरजेंसी समस्त जानिछ खाली जल्दी जल्दी करिवार अछि देन आउरी बहुत सारा पार्ट रहिलानी हमरो सो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 and 365 and financial emergency 360 जोटा कि emergency आमर आसी कोंडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 and वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी जेतले सस्पेंशन हबो सेही समय जर्मनी रु आमर आसी नेशनल इमरजेंसी बेसिकली प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टू डिनोट नेशनल इमरजेंसी जेमती अक्टोबर 1962 रे हितला जेमती चाइनीज एग्रेशन हितला जोटा कि टिल जनवरी 1968 पर्यंत चलथिला डिसेंबर 97 इंडो पाकिस्तान वॉर continue till March 1997 and June 1975 internal political crisis it continue till March 1977 after 1997 no such emergency has been pronounced even in 1999 1999 रे जेतले कारगिल वार हैला 1999 रे जेतले कारगिल वार हैला सेही समय रे भी आमे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करा जाय नथिला बुझा पड़ला ग्राउंड्स ऑफ आर्टिकल 352 कौन ग्राउंड्स रो डिक्लेयर करा जाय व्हेन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इट थ्रेटेंड जै थिबो वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन ये तीनटा कंडीशन रे थाए एंड वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन को एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड आर्म्ड रिबेलियन इंटरनल इमरजेंसी ताको कहा जाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ए आर्म्ड रिबेलियन को इंक्लूड कला ता पूर्व थिला इंटरनल डिस्टर्बेंस थिला एंड 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 बेसिकली प्रेसिडेंट डिफरेंट ग्राउंड रु चाहिले से एलाउ कराइला देन सेटा को चेंज करला 44th रे देन प्रेसिडेंट याको डिक्लेयर करंती सो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करि पारे ऑन द ग्राउंड ऑफ वार एक्सटर्नल एग्रेशन आर्म्ड रिबेलियन एंड डेंजर जे थिबो थियर ऑफ सेमती हिल करिकि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी करि परिबे टेरिटोरियल द एंटायर कंट्री और ओनली पार्ट ऑफ इट जरूरी नुहे कि पूरा कंट्री हबो किछि पार्ट भी करि हबो 42nd अमेंडमेंट एक्ट एनेबल द प्रेसिडेंट टू लिमिट द ऑपरेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न टू स्पेसिफाइड पार्ट सॉरी नॉर्थ नेशनल इमरजेंसी टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया
safeguard कौन president can proclaim national emergency only after the written recommendation from the cabinet. This is done by 44th Amendment Act 1978. This is very important. Written recommendation होबा जरूरी and it must be ratified by the both house within 1 month from the date of its issue by a special majority. Ordinance ହେଇଥିଲେ ସେଟା କେତେ ସମୟ ହେଇଥାନ୍ତା 6 week 6 month नुह 6 week माने जदि both house assemble हबार 6 week भीतर हबा दरकार ordinance but ये 1 month and that must be a special majority एवं special majority भी मध्य सही 44th amendment act रे include करा हितला एवं 1 month भी सेटा भी changes करा हिची 44th amendment act सेटा थिला आगुर कोन 2 month थिला. So these are very important anecdotes. If Lok Sabha stand dissolved during the declaration of emergency, then it must be approved by the reconstituted Lok Sabha within 30 days. जदि मानिनियो emergency declare हेगला तापर लोक सभा डिजल्व हेगला तापर नुआ लोक सभा इलेक्शन हेला परे सेमानकर से रीअसेंबल होबार 30 डेज भितरे जेमिति सेमाने फर्स्ट सिटिंग हो एंड प्रोवाइडर राज्य सभा हैज अप्रूव्ड इट इन द मीन टाइम माने लोकसभा तो नुआ असेंबली बट राज्यसभा परमानेंट मेंबर सो से माने ऑलरेडी अप्रूव कर दी थिबा दरकार. Duration 6 months at a time but can be extended to indefinite period with approval of the parliament every 6 months रे एटा आगु एग्री 1 year थाय. Okay, revocation केतरे हटै परिबा it can be revoked any time by president without requirement of approval of parliament. So जेतरे चाहे जेतरे सी रिवोक करिवो जदि पार्लियामेंट चाहिए रिवोक करि परिबो नाही यस ये भी करि परिबो. लोकसभा कैन इशू ए रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएशन. सो लोकसभा चाहिए आग से गोटे रिजोल्यूशन पास करियो कि भाई अब दरकार नाही जबरदस्ती पकई रखछंती एंड 1/10 ऑफ द रिजोल्यूशन पई एटलीस्ट 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा गोटे रिटन रिकमेंडेशन देबे स्पीकर को इफ हाउस इज इन सेशन और प्रेसिडेंट को देबे जदि हाउस सेशन रे नाही. स्पेशल सिटिंग shall be held within 14 days to reconsider the resolution. जदि हाउस रे नाही ताले प्रेसिडेंट को दिया जीवो प्रेसिडेंट आउ थरे माने गोटे स्पेशल सिटिंग लोकसभा रे डकई परिवे. जदि हाउस थिबो ताले स्पीकर डकई परिवे within 14 days. हां लोकसभा के इशू रेजोल्यूशन से करि परिबो. हां राज्यसभा कोन पय करि पारे राज्यसभा इथमे करि पारे कि कोडा लागि लोकसभा पाखे गोटे स्पेशल पावर या ऊपर दिया हिची कहीं ना पीपुल मैंडेट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड पीपुल ही रियली फेस कर प्रॉब्लम्स जो इमरजेंसी से यांकर इम्पोर्टेंस टी बेसी और राज्यसभा नॉर्मली तुम देखिए जिते भी इम्पोर्टेंट बिल पास हुए लोकसभा ही सब बड़ रोल प्ले करे. सम पार्ट ऑफ राज्यसभा किछि हियर एंड देयर केसेस रे बाकी से लोकसभा तो सुप्रीम और गवर्नमेंट फॉर्मेशन लोकसभा ही सब किछि तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करेबो किए लोकसभा. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. Okay, so special sitting hobo resolution has to be passed by a simple majority. Very important this one. Simple majority रे resolution pass करके रिवोक करियो. So रिवोक करिवार दीटा प्रोसेस गोटेला प्रेसिडेंट चाहिले मन इच्छा जेतले चाहे सेतले रिवोक करि परिबे और सेकंड हला लोकसभा केवल resolution पास करि परिबे एंड दैट टू 1/10 ऑफ द मेंबरंकर रिटन रिकमेंडेशन रहिबा जरूरी.
1/10 माने केते 55 लोकसभा। ओके, इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन, एति पर्यंत समस्त जानि थिबो। इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, टोटल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल। Center is entitled to give executive directions to a state on any matter. Any matter रे सी direction दे परिबो। Execute. The state governments are brought under a complete control of the center. Though they are not suspended, but the state government functions are brought under the control of center, and it is the structure of unitary feature. सेइथि पई हमर इंडियन यूनियन को कौन कहा जाए? फेडरल with unitary bias. Then legislative. Although the legislative power of a state is not suspended, the parliament is empowered to make laws on any subject mentioned in the state list. State list रो केवल यही कंडीशन में बनै परिबो, आउ गुटे देखि राज्यसभा जो रिजोल्यूशन पास करिवो. So laws made by parliament on state subject become inoperative 6 months after the emergency suspend हबो, क्या रिवोक हबो. emergency हटिबार 6 मास परे ये लॉ भी हटि जिवो, पार्लियामेंट जो लॉ बनैथिवो स्टेट लिस्ट रो. Then president can issue ordinance on the state subject if parliament is not in session. President can issue ordinance on state subject जदि parliament session नथिवो. माने ये कोन कंडीशन जेतळे emergency condition. Then parliament can confer power or impose duties upon the center or its officer and authority to respect of matters outside the union list. से कंडीशन है emergency condition रे union list बाहर भी मैटर को impose करि परिबो या confer करि परिबो पावर ऑफिसर्स मानन को. ये legislative power. Then financial power, president can modify constitutional distribution, president can reduce or cancel transfer of finances from center to state. So any modification continue till the end of the financial year in which so every such order has to follow within जोटा कि 1 year at a time, 1 year at a time. So these are basically emergency summary of center state relation, executive relation, legislative relation and financial relation. यदि देखिवा लाइफ ऑफ द लेजिस्लेचर लोकसभा may be extended beyond its normal term, 5 year अछि by law of the parliament, 1 year at a time for any length. Then state legislature, parliament may extend the normal tenure of the state legislature assembly by 1 year at a time मध्य ये भी करि परिबो. And the extension cannot continue beyond the period of 6 months after emergency ceases to be operative. emergency खत्म हेलार 6 months पर्यंत मैक्सिमम कंटिन्यू हे परियो. Impact of national emergency on fundamental rights, article 358 very very important. Automatically suspend जेतले emergency लागिवो, it automatically suspend article 19 and revives also automatically for entire duration of emergency. Emergency जदि 1 year 1 month अछि, so ये भी 1 year 1 month रहिबो. The impacts of the article 19 only, that is only 19, article 358 कौन कहूची, only 19 article operated only in external emergency. This is also very important. Only case of कोउठी national emergency, sorry external emergency, that is external emergency माने कौन, war or external aggression, not armed rebellion cases.
इंटरनल इमरजेंसी केस रो आर्टिकल 19 सस्पेंड हबो ना। ये क्वेश्चंस जे बनेबो जे टिके भलो क्वेश्चन बनेबार थिबो एटी बने हबो फसे हबो आराम से। एट इट एक्सटेंड टू द एंटायर कंट्री। एमिति नुहे कि धर दीटा स्टेट रो इमरजेंसी लागि छि से दीटा स्टेट रो तुमरो 19 खत्म हबो नहीं, पूरा कंट्री रे खत्म हबो इफ देयर इज ए एक्सटर्नल इमरजेंसी। क्लियर समझते? आर्टिकल 359 ये प्रेसिडेंट्स ऑर्डर रिक्वायर्स प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फॉर सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स व्हिच कैन बी एंटायर ड्यूरेशन और शॉर्टर पीरियड। प्रेसिडेंट ऑर्डर दरकार कि कौन कौन फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करा दियो। इट इंपैक्ट ऑल द फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21. So that means article 20 and 21 can never be suspended during national emergency. आर्टिकल 20 कौन कहूँ 20 आर्टिकल 20 अरे ये दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। अरे कौन हो इट ऑपरेट्स इन बोथ अरे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन जानना। It operates both types of emergency. It extend part of entire country. तामाने both type of emergency माने कौन external and internal cases से। अब ये part है पारे या entire country भी लागू है। ये पारा entire country। Article 358, 359 very very important. Try to remember this. It may come in the examinations. Judicial review. अरे कौन हो जी ये 38th Amendment Act 1975 से कौन है ना डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्यून टू द जुडिशियल रिव्यू माने जदि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हबो ताकू जुडिशियल रिव्यू करी हबो नाही। 44th Amendment तार जवाब रे आसिला कौन एभव प्रोविजन वाज डिलीटेड एटा को डिलीट कर दिया इम्यून नो। सो इन 1980 मिनर्वा मिल केस proclamation can be challenged on the ground of malafide or declaration was based on wholly extraneous or irrelevant facts or is absurd or perverse useful useless ground रो proclaim जदि हेइतिबो ताले सेही कंडीशन रे जुडिशियल रिव्यू हेइ पारिबो। सो प्रेजेंट स्टेटस कोन जुडिशियल रिव्यू हेइ पारिबो। State emergency also known as president rule or constitutional emergency. Constitution does not use the word emergency or this situation. Okay, so normally president's rule ही कहा जाए। First instant के बेइतला June 1951 the Punjab government was dismissed despite having clear majority in the assembly. ये mere misuse of the power. Till date article 356 has been used approximately 120 times. 120 times. So कौन grounds to declaration करा जिवो based on the report of the governor of the state or otherwise if president is satisfied that the situation has arise in which the government of a state cannot be carried
on in accordance with the provision of the constitution. Constitution ର କ'ଣ provision कि भाई तुम सरकार फॉर्मेशन करि पालन. Article 356 confer power upon the union to ensure that Article 355 become ineffective. 365 ये दुटा condition रे 356 and 365 whenever a state fails to comply the direction of the center. आर्टिकल 355 कौन कहूँ स्टेट को प्रोटेक्ट करिवो यूनियन जदि जेतले पावर को तारो इन अकॉर्डेंस विथ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से चालू नथिवो सेटा ला 355. सो सेफगार्ड कौन इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउस विदिन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. प्रोसेस हला सिंपल मेजॉरिटी पास होवा दरकार. इफ प्रोक्लेमेशन इज इशूड एट ए टाइम व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व or dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 2 months without approving the proclamation, then the proclamation survive until 30 days of the first sitting of the Lok Sabha. तामाने कौन जदि मान्य प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम हो गला प्रेसिडेंट हेबार 2 मास भितर हाउस रु एप्रूव होवा दरकार. मानिनियो सही समय हाउस नाही या डिसोल्यूशन हो जाइछि तो तार रीअसेंबल होबार हाउस रो 30 डेज भितर ताको पास होवा दरकार एवं राज्यसभा से पास कर देथिबो. If approved by both houses, the president will continue for 6 months. It can be extended maximum period of 3 years with approval of the parliament every 6 months. 6 मास को थरे अप्रूव करियो पार्लियामेंट एंड मैक्सिमम पीरियड 3 इयर्स है. 44th Amendment Act 1978 beyond 1 year president rule can be extended by 6 months at a time only when the two conditions are fulfilled. This is very very important. এই कंडीशन धीरे आसतिला जेमति दिल्ली रे हेतिला. दिल्ली रे जेतले 2014 रे जेतले सरकार आसिला 2013 रे गोटे सरकार थिला आम आदमी पार्टी सरकार. सो 2013 रे जेतले सरकार थिला से माने कोन रिजाइन देकी पळे गेले तो प्रेसिडेंट नु लागि गेला. प्रेसिडेंट नु लागिला परे 6 मास गला पुणी 2014 इलेक्शन है. इलेक्शन है नुआ गवर्नमेंट आसला सेंटर रे से माने आउ थे प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड कले अगेन 1 year अगेन 6 months दैट 1 year है. 1 year पर तुम यदि आउ थे प्रेसिडेंट रूल लगे चाहिए ताले ये कंडीशन कौन व्हेन टू कंडीशन आर फुलफिल प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज देयर इन होल और पार्ट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन मस्ट क्लैरिफाई दैट general election to the legislative assembly of the concerned state cannot be held on account of difficulties. Basically ये condition very important. तामाने तुम्हें 1 year maximum period रहिला 1 year to माने दी थरु एक्सटेंड अधिका करि परिबो नाही. आगु 3 वर्ष थिला से माने ताकू कोन कहले 3 वर्ष एबे भी अछि बट 3 वर्ष करिया को हेले 1 year परे तुमको इलेक्शन कमीशन सैटिस्फाई होबा दरकार कि मो पाखरे औकात नाही मु करि परिबिनी इलेक्शन. बुझला नहीं हाँ मु करि परिबे नहीं इलेक्शन जेमिति जम्मू एंड कश्मीर होई छी. बुझला नहीं सेठी तो दर अलगा प्रोसेस अछि बट दिल्ली रे सेमथि हेइथिला 1 year हे जाइथिला एंड तांको बाध्य होला इलेक्शन करिया पे. से माने पॉलिटिकल रीजन नु चाहु नथिले इलेक्शन पॉलिटिकल से जानिले कि जदि आमे 14 रे सेंटर रे आसिला बीजेपी से माने चाहिले कि जदि आमे एबे इलेक्शन करिवा ताले शायद जो आम आदमी पार्टी इलेक्शन जीति जाई पारे. तो बट तांको करिया को बाध्य हेले काहे ना ई कंडीशन नेशनल इमरजेंसी टाइम रे तमे जो 1 year जो पीरियड टाको तमे माने 3 वर्ष पर्यंत करि परिबो नहीं नेशनल इमरजेंसी केस पे मन इच्छा तमे करि परिबो. हां केस पे मैक्सिमम 3 वर्ष एवं 3 वर्ष 1 year ठू भी अधिका हबा को हेले इलेक्शन कमिशन को ताको सैटिस्फाई करिया पड़िबो अदरवाइज जुडिशियल रिव्यू हेले फसी जिवो.
ये भी एनी टाइम रिवोक करि परिबे प्रेसिडेंट रूल एनी टाइम रिवोक करि परिबे इफेक्ट कोन हो A president acquires extraordinary power, can take up function of state government and powers vested in the governor or any other executive authority in the state. Can declare the power of the state legislature are to be exercised by the parliament. Can declare that power of the state legislature are to be exercised by so माने state legislature सब function parliament को transfer हो. He can take all other necessary steps including suspension of constitutional provision relating to anybody or any authority in the state. But basically state under पूरा center आसीजो. आउ कौन ना प्रेसिडेंट डिसमिस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जोंडे कि तंगर किछि काम नाही हाईकोर्ट र पावर किछि इफेक्ट होबनी बट स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट कैरीज ऑन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विथ द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और एडवाइजर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ता माने केमदी चलियो स्टेट रो जो लेजिस्लेटिव मशीनरी स्टेट रो जो पार्टी तांकर किछि फंक्शन रहइबो नाही स्टेट रो एमएलए रो किछि फंक्शन रहइबो नाही फंक्शन कार रहइबो सेंटर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देन गवर्नर एंड देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव जोंडे की आईएएस ऑफिसर ओएस ऑफिसर माने ही चलेबे so state assembly may be dissolved or suspended depending upon the prevailing circumstances such a proclamation may be declared that the power of the state legislature shall have exercised by or under the authority of parliament okay state legislature parliament authority अनुसार state legislature function करियो article 357 कौन कहूँ ना पार्लियामेंट मे कन्फर द लेजिस्लेटिव पावर ऑन द प्रेसिडेंट एंड ऑथराइज हिम टू फर्दर डेलीगेट्स इट टू एनी अदर अथॉरिटी सो बेसिकली पार्लियामेंट ताको पावर दबो काहा को प्रेसिडेंट को कि लेजिस्लेट करिया पे स्टेट सब्जेक्ट व्हेन हाउस ऑफ द पीपल इज नॉट व्हेन हाउस ऑफ द पीपल इज नॉट इन द सेशन सॉरी हाउस ऑफ द पीपल माने लोकसभा नॉट इन द सेशन पार्लियामेंट कैन ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सैंक्शन expenditure from consolidated fund of state. Various committee रो observation कौन सरकारी कमिशन एटा मन रखिथिबो ये committee related आसी पारे 1987 article 356 should be used very sparingly as a matter of last resort. रिपोर्ट थिबा दरकार गवर्नर प्रॉपर रिपोर्ट देथिबा दरकार ये प्रेसिडेंट पाकू नो डिजोल्यूशन असेंबली टिल प्रोक्लेमेशन इज राटिफाइड बाय द पार्लियामेंट ये सजेशन करछथि कि डिजोल्यूशन होबा कथा नुहे जते पर्यंत प्रोक्लेमेशन पार्लियामेंट राटिफाई न करछि या पार्लियामेंट ताकू अप्रूव न करछि सिला नेशनल कमिशन फॉर रिव्यूइंग द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 ए वार्निंग शुड बी इश्यूड टू द रेंट स्टेट इन द स्पेसिफिक टर्म्स Before taking action under Article 356, any explanation received from the state should be taken into account. So कहले जदि देखले किछि स्टेट तुमर फॉलो कलानी तुमर डायरेक्शन फॉलो कलानी अंडर आर्टिकल 365 से कंडीशन तुमे ताको गोटे वारंट दे परिबो गोटे वार्निंग इशू करि परिबो 356 को एते शीघ्र ये करिवा नाही एवं एक्सप्लेनेशन स्टेट रो ताकू नबा दरकार नो डिजोल्यूशन असेंबली टिल प्रोक्लेमेशन राटिफाई सेम जिंस एठी भी कहले आर्टिकल 356 शुड बी सुइटेबल अमेंडेड टू एंश्योर दिस अमेंड करिया पे कहले एंड गवर्नर रिपोर्ट शुड बी गिवन वाइड पब्लिसिटी इन ऑल द मीडिया एंड इन फुल safeguard corresponding to article 352 should be incorporated in article 356 जेमिति 352 को तार बहुत सारा सेफगार्ड दिया जी एमिति समय करि परिबनी प्रॉपर कैबिनेट राइटिंग दरकार सेही जिंस एठी भी हबा दरकार ये कहिसंती सेले पंची कमिशन सी भी सेंटर स्टेट रिलेशन ऊपर थिला रेकमेंड इंपोजिशन लोकलाइज्ड इमरजेंसी सो ड्यूरेशन शुड नॉट बी एक्सीड 3 मंथ and amendment be made in article 356 to incorporate the guidelines of SR Bhubaneswar in 1994 this is very important. Then law commission कहछि the situation could have been better handled by the use of article 355
देन इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356 आर्टिकल 355 कौन एबे कहितली माने यूनियन को हमर से यूनियन में कर्तव्य है स्टेट को प्रोटेक्ट करिवो यस यस कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर केस रे स्टेट को प्रोटेक्ट करिवो सब जानी पारछ ना कोन को आर्टिकल मन रखे पड़ुछ then judicial review and article 356 SR Bomai case 1994 SR Bomai के जानिछ एबे आंध्र कर्नाटक रे प्रेस सीएम थिले जानिछ बसवराज बीएस बोमाई तांकर बापा सब खोज खबर किसी रखो ना नहीं so SR Bomai 1994 no restriction on the court from examining the material on the basis of which president form his satisfaction the proclamation is not immune from the judicial review judicial review हबा दरकार से कहउचंती एवं माने किए कहिछेटा सुप्रीम कोर्ट no restriction on the court from examining the material on the basis of which president formed is satisfaction कि president थोड़ी ना तांको मन इच्छा कर देबे president को डॉक्यूमेंट देखि कि ये satisfy हेले कि हां एठी president रूल लागिबा दरकार या तापई material evidence ठीक थिबा दरकार proclamation is not immune from judicial review हबो and supreme court or high court can strike down the proclamation if it is modified or based on wholly irrelevant or extraneous ground जेमिति एई गवर्नमेंट 2014 परे बहुत सारा केसेस रे प्रेसिडेंट लागि छि अरुणाचल प्रदेश ये सेटू रिवाइव करै छि उत्तराखंड वगैरह केस रिवाइव करै छि सुप्रीम कोर्ट पावर कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 356 is conditioned and not an absolute power ये वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट तापरठू से माने कमी गले आ प्रेसिडेंट रू लगेलेनी अलगा काम करिया को लागिले पावर कन्फर बाय आर्टिकल 356 इज कंडीशनड ये एब्सोल्यूट पावर नो प्रेसिडेंट शैल नॉट डिसॉल्व द असेंबली टिल अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट सेंटर शुड इशू वार्निंग डिसॉल्व कथा कहूची सस्पेंड करि परिबो डिसॉल्व कथा कहूची तमाने तुमे ये भाबियोनी कि पार्लियामेंट रो बिना अप्रूवल प्रेसिडेंट लागि परिबोनी प्रेसिडेंट लागि परिबो बट डिसॉल्व करि परिबोनी असेंबली को डिसॉल्व करि परिबो नाही डिसॉल्व हेला माने असेंबली डिसॉल्व हेना इलेक्शन री इलेक्शन हे जिवो ना वंस द प्रोक्लेमेशन इज इशूड द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू गो एंड दे आर कंट्रोल दे कैन नॉट टू गवर्नमेंट इन वन स्फीयर टू गवर्नमेंट माने सेंटर भी रहिबो स्टेट सेमति हो परिबोनी Secularism is a basic feature of the Indian Constitution and its violation by the state government makes it liable to dismiss as per Article 356. माने सेक्युलरिज्म को एठी कहले बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवं जदि यार वायलेशन हबो ताबने भी गवर्नमेंट को डिसमिस करा जाई पारिबो कोर्ट कैन प्रोवाइड रेमेडी reinstate the government if intention are proved malified जेमति एमति बहुत सारा केसेस रो कोर्ट करिछि reinstate करिछि सर देयर कैन नॉट बी टू गवर्नमेंट इन वन स्टेट माने कोटे सेंटर और हमर स्टेट जदि प्रेसिडेंट रो लागि गला जो दीटा गवर्नमेंट रहि परिबेनी माने स्टेट गवर्नमेंट रहिबो सेंटर भी रहिबो सेमति हे परिबो स्टेट गवर्नमेंट हैज टू गो बट न लागिया पई से प्रोविजन कहिछन बहुत सारा ठीक है जी देन फाइनेंशियल इमरजेंसी ये तो किसी इंपोर्टेंट नुह फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनेंशियल कंडीशन जो कंट्री गुड सेप रथिबो
Till that, no financial emergency has been declared. Even the country faced severe economic crisis 1991. मात्र सप्ताह दी सप्ताह थिला फंड सेतबे लागिनी माने आउ केबे लागि परिबोनी. ग्राउंड्स कोन इफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ देयर थ्रेटेंड हेतियो सेही समय प्रेसिडेंट डिक्लेयर करिवे फाइनेंशियल प्रोसीजर मस्ट बी अप्रूव विद इन 2 months. सेम जिंस अछि नो मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रेस्क्राइब फॉर इट्स ऑपरेशन सेमति नाही. रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंटिन्यूस. इट वेरी इंपोर्टेंट. ये भी सिंपल मेजॉरिटी रे ये प्रोक्लेमेशन पास हो. रिवोक जतले प्रेसिडेंट चाहिए एनी टाइम से चाहिए रिवोक करि परिबे. एथरे किछि ये नाही. पार्लियामेंट्री अप्रूवल दरकार नहीं. पार्लियामेंट्री अप्रूवल कोठी दरकार कोथे दरकार रिवोक करिया पे आर्टिकल 352 को रिवोक करे पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर ना नहीं रिक्वायरमेंट नहीं. बट पार्लियामेंट चाहिए रिवोक करि परिबो ना नहीं 352 को करि परिबो. केमती करि परिबो पार्लियामेंट केमती करि परिबो आर्टिकल 352 को रिवोक 1/10 ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट कोठी देबे राज्यसभा रे लोकसभा रे देबे. वेरी गुड. So effect कौन president can give direction to state to observe the finance and property को ताकू प्रोटेक्ट करिया पई डायरेक्शन दबा कि सैलरी काटी दियो. जते एम्प्लॉय अछंती हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस मानकर सैलरी काट. ऑल मेनी ऑफ फाइनेंशियल बिल पास्ड बाय स्टेट कैन बी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसीडरेशन. तो ये सब रहिबो. सो क्रिटिसिज्म कौन ना इट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स used frequently not as a matter of last resort, imposed on political ground and compromise the federal spirit. ये सब तारा criticism अच्छी. Then देखिए union territories and special provision for the different states. Union territory and special provision for the different states. So union territory देखियो ये सब 356 1956 रे ये सब तीनटा आगो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप एंड दिल्ली. देन 1961-62 रे दादरा नगर हवेली एंड दीव का पाखरु आस्थिला ये पोर्तुगीज पाखरु. पुडुचेरी फ्रेंच पाखरु 62 रे. चंडीगढ़ 66 रे. जे&के श्रीनगर एंड जम्मू बेसिकली 2019 हमर एटी यूटी करा गला एवं लद्दाख बेसिकली ये भी 2019 रे करा गला. एबे रिसेंटली यूटी ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दामन दीव गोटे कटी है ना से 8टा हो जाइए नले 9टा होता. सो एटा कौन है दादरा नगर हवेली एंड दामन दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 2019 रेटा है. एंड एस जो आमर श्रीनगर आ जम्मू माने समर कैपिटल विंटर कैपिटल. देन देखिबा एडमिनिस्ट्रेशन. Every UT is administered by president acting through an administrator appointed by him, act as a agent of president. The president can specify the designation of administrator जोंटा कि it may be LG ही पारे और chief commissioner और administrator ही पारे. The president can also appoint the governor of a state as the administrator of the adjoining UT. बुझिल नहीं मान्य पुडुचेरी अच्छी ता पाखरे तमिलनाडु अच्छी तो तमिलनाडु रो गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेटर बने हेबो यूटी रो भी दीटा काम करि परिबो फंक्शन. अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑल द मैटर्स ऑफ यूटी रिलेटिंग टू तांगर लॉ फाइनेंस बजेट सर्विस अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर. Legislative power. The parliament can make laws only on any subject of the 3 list, that is state list for UTs including the state list. For UTs, the power of parliament extend to the Puducherry, Delhi which have their own local legislature.
बाकी सब यूटी रे सब बनाती केवल दिल्ली आउ ये छाड़ी द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुडुचेरी कैन आल्सो मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट सिमिलरली दिल्ली भी मध्य सेम judiciary parliament can establish a high court for UT or put it under the jurisdiction of high court of adjacent state जेमिति तुमर दिल्ली रे तार निजर हाई कोर्ट अछि ओके बट अंडमान निकोबार निज हाई कोर्ट नाही तांकर हाई कोर्ट कोठी कलकत्ता हाई कोन हाँ वेस्ट बेंगल हाई कोर्ट जेटी कलकत्ता हाई कोर्ट सहित तांकर एडजेसेंट अछि जेमिति तुमर लाक्षाद्वीप कोठी आछि केरला तो सही भाया बेसिकली एडजेसेंट हाई कोर्ट सहित अटैच कर दे हम सो स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली दैट इज 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रही 1991 अंडर आर्टिकल 239 ए ओके सो कौन द रीडिजाइन द यूटी ऑफ दिल्ली एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऐसे कह एनसीटी designated the administrator of Delhi as the lieutenant governor, created legislative assembly and council of state minister for Delhi, and the chief minister is appointed by president, not by lieutenant governor. In case of failure of constitutional machinery, the president can impose his rule in the territory like president rule in the states. Clear? Article 370 of the Constitution J&K and Ladakh देखिए Constitution proclaimed to be temporary, transitional and special provision and provided for a special status to J&K and पाई दिया इतला special status. 5th August 2019 President of India promulgated Constitution application to J&K order 2019 which stated that provision of the Indian Constitution were applicable in the states. तो माने भावुच कौन आर्टिकल 370 हटि जाइए तुम एपर्यंत कौन भावुल आर्टिकल 370 वाज डिलीटेड इट वाज नॉट इट इज देयर खाली चेंजेस हां एप्लीकेबल हो पारे बुझिले नहीं So as per Article 370, Center needed the state government concurrence to apply laws, except in defense, foreign affairs, finance and communication. ये Article 370 थिला. Also, the states resident lived under the separate state of laws, such as those related to citizenship, ownership of the property, separate penal code, fundamental right. ये सब थिला. केवल खाली चेंज कर देले कोना ना constitution applicable हे जिवो. खाली एती चेंज कर देछि. How it is everything is there. So J&K Reorganization Act 2019 was passed by the Parliament, which reorganized J&K into two UTs, जोंटे कि J&K division आ गोटे हला लद्दाख. J&K division को with legislative assembly and UT of Ladakh को without legislative assembly. सोनम वांगचुक सुनिछ ना से डिमांड करछन्ती एठी legislative assembly हो बुझे हंगर स्ट्राइक 100-150 लोक नहीं आसुँच राजघाट रे बसवे बोली ताको आसियो दौना. सो J&K डिवीजन एबे जो इलेक्शन होची J&K जे यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली तुम ये भाबीबनी कि J&K इज ए स्टेट हे जिवो इलेक्शन हे गले. J&K इज स्टिल यूटी पुडुचेरी दिल्ली एंड J&K सही भलिया स्टेटस रे ये पड़ी आसी. से तो मिसकम्युनिकेशन केमती स्प्रेड हुए एमती 370 वाज हटिगले ई पावर ही मिलिबन ना हटिगले पावर कोड पाइब. इट इज द 370 इज गिविंग द पावर टू प्रेसिडेंट टू अमेंड. इट वाज नॉट डिलीटेड, इट वाज अमेंडेड. Okay,
So J&K before 5th August stayed with special status, no special status. Dual citizen is single. Constitution जहाँ applicable है गला पूरा हो, बुझे ना? Separate flag for J&K and Triyanga will be on only flag. No reservation of minorities such as Hindu and Sikh. Minority eligible for 16% reservation. Indians from other state cannot buy property. Yes, can buy. RTI not applicable. Duration of legislative assembly 6 year थिला, इठी 5 year है गला. Constitution जहाँ होची. Women from J&K marriage person out. Marriage person outside state who loses citizenship, but it is our citizenship चक्कर नहीं, गुटी citizenship है गला. And right to education not applicable for children. It is right to education आसीगला. These are so changes आसिला after 5th August 2019. Sir, state with special status for the कोड एक status. तार हिस्ट्री अच्छी बेसिकली से समय दिया ही जरूरी थिला, सो दैट तांको सेते फील होतला ना कि इंडिया सहित मर्जर करले तांकर इंडिपेंडेंस खत्म हो, मुस्लिम मेजॉरिटी थिला, तो सेइथि में ताको सेइ भला स्टेटस दिया हितला. स्पेशल स्टेटस माने ताको स्पेशल प्रिविलेज थिला, एज ए डोमिनियन भलिया थिला. एंड डिफेंस वगैरह फॉरेन अफेयर ये सब आम अंडर थिला, ऑलमोस्ट तांकर कंट्रोल आम अंडर थिला, बट इंटरनली से माने इंडिपेंडेंट थिले. Special provision for some other states, Article 371 to 371J. For Maharashtra and Gujarat, Article 371, it authorized President to provide Governor of Maharashtra and that of Gujarat would have special responsibility in respect of development needs of Kau region, Vidarbha region, Marathwada region and rest of Maharashtra. Jodi fill kale. Then Saurashtra region, Kutch region and rest of Gujarat. Is Saurashtra and Vidarbha idita undeveloped area. सेथि पई ये जगह रे स्पेशल प्रोविजन करी पारिबो किए गवर्नर. पावर कोंटू पाउची आर्टिकल 371 एटा ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन नथिला, धीरे धीरे ताको अमेंड कराई. For Nagaland, Article 371A, the Act of Parliament relating to following matter would not apply to Nagaland unless State Legislative Assembly so decide. The religious or special practice of the Nagas. The religious and special practice of Nagas. Naga customary law and procedure. Naga customary laws and procedure. Administration of civil and criminal justice involving decision according to Naga customary law. ताको प्रोटेक्ट करिया पे. Ownership and transfer of land and its resources. The governor of Nagaland shall have special responsibility with respect to law and order in the state of Nagaland. So यार कहाँ responsibility आसला governor. ताउने बर्तन किए responsible जहाँ भी disturbance हो, internal disturbance center governor. In the state of Nagaland, so long as the internal disturbance occurring in Naga Hills, जोटा कि Tuensang area, establishing a regional council consist of 35 members for the administration of Tuensang district for the state. ये भी यही अंडर स्पेशल पावर दिया 1930 एते डिटेल से लेखनी खाली कहि दउ 371 आसाम पाई we president empower creation of committee for Assam Legislative Assembly consist of member elected from tribal area of the state. Then Manipur, Article 371C authorized president to provide for creation of committee of Manipur Legislative Assembly. Authorized president to provide the creation of committee for Manipur Legislative Assembly. जोटा कि सेम जिनस hilly area ru जोन थिबे किछि elected from hilly area. The president can also direct the governors shall have special responsibility to secure proper functioning of that committee. Andhra Pradesh pai, Telangana pai, that is 371D and 371E. सेमती इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी मिलवा दरकार. डिफरेंट area establishment एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनैब.
deal with certain dispute and grievances related kind of नुआ स्टेट क्रिएट कराई तो तापे गोटे स्पेशल पावर दिया जाइए आर्टिकल 371 ये कौन करी ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना जीवो आंध्र प्रदेश रे 36 Constitution Amendment Act 36 Constitution Amendment Act 1975 made Sikkim a full-fledged state of India Union and it included new article 371F containing provision with respect to size of Sikkim Legislative Assembly and representation of Sikkim as look Sikkim रे केते जण अछंती मेंबर असेंबली रे स्पेशल प्रोविजन कराई छी मिनिमम केते जण होबा दरकार गोटे असेंबली रो ये सीट 60 बट सिक्किम रे केते अछंती 30 गोवा रे 40 तो जो जो जगह कम अच्छी स्पेशल प्रोविजन करी अमेंडमेंट करी कराई छी सेथि लेखा साइज ऑफ द सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली द गवर्नर इज गिवन स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीस एंड एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सिक्किम जेमती मिजोरम पई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जोटा कि would not apply to Mizoram unless the state legislature decide religious and social practice ପାଇଁ Mizo tribe ପାଇଁ Mizo customary law administration of civil and criminal justice से Mizo customary law ପାଇଁ ତାଙ୍କର protection ତାଙ୍କର ownership ତାଙ୍କର land ତାଙ୍କର customary ତାଙ୍କର religious protect କରିବା ପାଇଁ state legislative assembly decide କରିବ not parliament law एठी applicable हबो नाही similarly अरुणाचल प्रदेश 371H Governor special responsibility for Goa madhya 370Y provision with respect to size of the जोंटे कहउथली not less than 30 member जोंटे कि 40 एबे अछंती Similarly Karnataka basically president empowered to governor of Karnataka special region कहा पई basically Hyderabad Karnataka region ये undeveloped area तो ता पई स्पेशल प्रोविजन करि परिबे रिजर्वेशन सीट रखि परिबे एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग student belong to that region a region student by Hyderabad Karnataka region this is also very important so these are basically special provision जोंटा कि हमरो states पई UTs पई हमर है छी then देखिबा local self government so local self government concept जो देखिबा